Welcome back, students. In the previous videos, we have developed the intuition about search agents. Now, let's see some strategies that can help us to solve these search problems. Okay. So, today's agenda is to look into uninformed searches, and the basic reason that they are called uninformed searches is because they do not use any domain knowledge. They do not have any access to any domain knowledge. That is why they are called uninformed searches. And we will see janab ke how these uninformed searches unfold themselves. Okay. In this context, we can talk about a couple of searches. We're going to talk about breadth first search, depth first search, depth limited search, iterative unique search, and uniform cost search. So all these searches will come into our purview. Talk about these in these videos on in the set of videos you will see in this week. So let's start with breadth first search. So in breadth first search, the basic idea is that our frontier is our export is implemented as a FIFO queue, and we know this FIFO means first in first out. First in first out का मतलब जनाब के जो नोड पहले आप इंसर्ट करेंगे वही नोड जो है वो पहले आपके पास जो है वो प्रोड्यूस होगी. दिस इज द बेसिक idea behind breadth first search and the basic idea behind the different searches that we're going to see. And you will see janab ke eventually the different searches will only differ in the fact ke they will use a different strategy to implement the frontier. Okay, so the breadth first search uses a FIFO queue to implement the frontier. Okay, so let's start with a demonstration first. So let's suppose we are starting from this initial state A, and so this is our initial state, and we want to go to this goal state M. So this is going to be our goal state, and let's see janab ke how breadth first search will proceed and why it is called a breadth first search. So we'll start with A. So again, I'm also going to keep track of all the nodes that remain in the frontier list. So again, so initially A will be in our frontier list. Okay. So A को हम एक loop start हो जाएगा हमारा. So we'll start by extracting the first list from the first element from the frontier list, and this is going to be A. So is A the goal node? And the answer is no. The A is not the goal node. So we are going to look into the successors of A. A के successor कौन से हैं? The successors are B, C, and D. And why the A has changed color? Because we have discovered A. ठीक है? So we are now exploding the nodes B, C, and D. So now frontier list contains 3 nodes. It contains B, C, and D. So again, let's suppose that the nodes are entered in a let's suppose in an alphabetical order. तो पहले B insert हुई है, फिर C insert हुई है, फिर D insert हुई है. That would mean जनाब के B will be explored first. पहले B निकलेगी बाहर, और B को जब हमने बाहर निकाला तो हम वेरीफाई करेंगे B गोल नोड है. अगर B गोल नोड नहीं है तो जनाब फिर क्या होगा कि उसकी जितनी सक्सेस है उनको उठा के हम लिस्ट में डाल देंगे. नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी all the nodes that you are seeing in the light gray are in the frontier list. ठीक है. अच्छा, आपको याद होगा जनाब की जो फ्रंटियर लिस्ट है कुछ इस तरह से B निकल चुकी है. तो जनाब जो फ्रंटियर लिस्ट के कंटेंट्स हैं उनमें अब C मौजूद है, D मौजूद है, E मौजूद है, F मौजूद है, G मौजूद है. तो जो नोड पहले बाहर निकलेगी अब वो कौन सी नोड होगी जनाब, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इट्स गोइंग टू बी C. And then the frontier list again has become a D, E, F, G, H, I, J. So the first node that's going to come out is D because first in first out. And then you can see janab ke all these nodes are in the frontier list. Okay, so E, F, G, H, I, J, K, L. This is the frontier list. ठीक है. In the same order. तो पहले E बाहर निकलेगी. E के कोई और एग्जिस्ट नोड नहीं करता, तो यानी हमने E को पूरा एक्सप्लोर कर लिया. E को भी देख लिया, इसके सारे सक्सेसर्स को भी देख लिया जो कि कभी खिलाफ होते हैं. E will be in the closed list. ठीक है. तो E is turned black, then F is black and G is black. And जैसे ही G black हुई जनाब B भी black हो गई. Why B black? Because B की तमाम ने एक्सप्लोर को देख लिया. तो B have been explored to the fullest, then H, then I, then J. And as soon as J turned black, C turned black because J के साथ ही हमने C को भी देख लिया और C के साथ सक्सेसर जो उनको भी देख लिया. Then K turned black, L and M turn करने के बाद जनाब D
टर्न ब्लैक, और डी के टर्न करने के बाद हमने ए के सक्सेस को देख लिया, ई बी सी डी, तो जनाब ए हैज टर्न ब्लैक, and then we have found the solution from A to B to and D. And why it's called breadth first search, and you can see it's very easy to observe because the searching is going breadthwise. So the search is going पहले B C D and then E F G H I J को, अगर उसके बाद कोई नोट दो तो जनाब सी ऑर्डर में देख रहा है, तो this is more breadthwise. That's why the name breadth first search is used with this searching strategy. So the idea is very simple. You can see the only this is the exactly the same code that you see in pre-search, but the only difference is that the frontier has been initialized as a queue, a FIFO queue. Okay, and explode is a set that will keep track of all the nodes that we have seen so far. तो जनाब जैसे ही आपने किसी नोड को डी क्यू कर लिया, यानी कि फ्रंटियर से निकाल दिया, तो हम उसको एक्सप्लोड में ऐड कर लेंगे ताकि उसको दोबारा ऐड ना करना पड़े. तो अगर वो स्टेट गोल्ड स्टेट है तो हमारा काम खत्म हो चुका है. अगर गोल्ड स्टेट नहीं है, उसके नेबर्स को निकाल लेंगे, और नेबर्स अगर फ्रंटियर में नहीं है और एक्सप्लोड में नहीं है, यानी कि जनाब जो नोड हमने ऑलरेडी फ्रंटियर में डाल दिया, एक्सप्लोड में डाल दिया, उनको दोबारा से नहीं देखना. ये सिर्फ एक ऑप्टिमाइजेशन है ताकि जो रिपीटेड स्टेट्स हैं वो हमें प्रॉब्लम ना करें. यानी कि अगर हमने एक स्टेट को देख लिया तो अगर दोबारा वो स्टेट आ जाती है किसी तरीके से, यानी कि हम कराची से आ चुके थे, तो कराची का जो स्टेट, कराची के बाद हम जहाँ जा सकते हैं वो हैदराबाद है, लेट सपोज के खुलस्तार है, लेट सपोज के गवादर है, बट मैं हैदराबाद के बाद कराची भी आ सकता हूँ. बट अगर कराची ऑलरेडी फ्रंटियर लिस्ट में थी स्टेट या एक्सप्लोर लिस्ट में थी, तो जनाब फिर दोबारा कराची ऐड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज यूजलेस. इट विल हैव मोर कॉस्ट देन द इनिशियल स्टेट, बिकॉज हमारी पास कॉस्ट है सारी पॉजिटिव है. ठीक है, सो क्राइटेरिया क्या है जनाब के, अगर ब्रांचिंग फैक्टर फाइनाइट है आपका, देन इट इज कंप्लीट. breadth first search is complete अगर branching factor जो है finite. Again you can just observe के why the time complexity is b to the power d, because very easy to understand. So let's suppose now this is the initial state, and you after every initial state you have b children, so dot and b children. ठीक है, you always have b children. तो पहली स्टेट पे जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 1 है, दूसरी स्टेट पे b होंगी, और अगर हर स्टेट के b चिल्ड्रन है तो डॉट b चिल्ड्रन, देन इसके भी फिर b children, then इसके भी b children and so on so forth. तो नेक्स्ट स्टेट पे b into b स्क्वायर होंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेट पे b क्यूब होंगे, unless and until you are at the last state जहाँ पे सोल्यूशन. तो again that let's suppose के वो जो स्टेट है b to the power d है. And if you add this series 1 plus b square plus b cube and b to the power d, then by simple algorithmic asymptotic notation you can say जनाब के this whole series is b to the power d. So again this whole series is basically ये sum जो है b के power d करा, because if you can, so you can if you want you can have this intuition with you to calculate these things. So let's suppose जनाब के if you have an sum a plus ab a to ax square plus ax. So let me have a better quadratic equation. So okay, let's suppose we have an equation lot ax square plus bx plus c. So this is, again we can see जनाब के this equation should be less than equal to this equation, x square plus bx square plus cx square, and thus we can write जनाब के x square plus bx plus c is less than equal to a plus b plus c x square, and then we can say जनाब के x square plus bx plus c is less than equal to, let's suppose, dx square. We can a plus b plus c is equal to d, and as from algorithms we know जनाब के we can write this thing as big O x square. So basically this is the same thing that we have done over here. ठीक है, why did it require exponential space, because for at any given state you have to keep track of all the states जो के उसके बाद exist करते. So again at the last stage you have to keep hold of b to the power d nodes, and that's why it's very costly. ठीक है, so it is optimal, yet it is optimal अगर तमाम action cost बराबर है, and it's optimal. तो again तमाम action cost equal है, then this solution will give you an optimal state. Implementation, again we have seen implementation is done using FIFO cube. However, one thing that you should always keep in mind, and this question is very important for you जनाब के,
अगर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक, इट्स एक्सपोनेंशियल, देन व्हाई आर वी यूजिंग बीएफएस? ठीक है, तो जनाब हम बीएफएस को क्यों यूज कर रहे हैं? तो अगेन दैट्स इज समथिंग दैट इज फूड फॉर थॉट, फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. ठीक है. So how bad is BFS? So again, so let's put this thing into some context. So again, अगर आपके पास डेप्थ 2 है तो केवल 110 नोड्स आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी. अगर आपका ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो 10 है तो again पहले नोड के ऊपर depth is तो again you can easily find it out why it is. तो पहले नोड पे तकरीबन आपके पास एक नोड होगी, दूसरे नोड पे 10 नोड्स होंगी, तीसरे पे 100 नोड्स होंगी. You add them all up, then it's about 111 nodes. ठीक है. सो तकरीबन टाइम आपको 0.11 मिली सेकेंड लगेगा अगर आप 1000 बाइट्स पर नोट को स्टोर कर रहे हैं, 1 मिलियन नोट्स पर आप देख रहे हैं. तो इट्स वेरी इजी अगर डेप्थ 2 है. यू कैन सी जनाब के अगर डेप्थ 4 हो जाती है तो ये डबल नहीं हो रही बल्कि क्वाड्रेटिकली इंप्रूव हो 10.6 मेगाबाइट्स एक्सपोनेंशियली. और अगर डेप्थ 16 हो जाती है विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन जनाब इट विल हैव 10 टू द 10 एक्साबाइट्स. ठीक है, तो 1000 गीगाबाइट्स 1 टेराबाइट, 1000 टेराबाइट्स 1 पेटाबाइट, 1000 पेटाबाइट इज 1 एक्साबाइट. ठीक है, एंड इट विल टेक अबाउट 350 years to find a solution to this problem. Only if the depth solution is 16, it's very small depth factor. So space requirements की बहुत ज़्यादा है, time requirement भी बहुत ज़्यादा. It's a naive algorithm, but it helps you develop the intuition about how search works. ठीक है. सो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स प्लस एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है बीएफएस के हवाले से. ठीक है जी. चलें जी, इस वीडियो के लिए काफ़ी. नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रा डेप्थ फर्स्ट सर्च को एक्सप्लोर